हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन्स प्रैक्टिसिंग वोकेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि नेट इनकम इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ पर्सन्स प्रैक्टिसिंग वोकेशन। दूसरा, the problem of red ink interest arises when the due date of a transaction falls after the closing date of current account। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि नो इंटरेस्ट इज अलाउड व्हेन द ड्यू डेट ऑफ अ बिल falls after the date of closing the account. However, interest from the date of closing to such due date is retained in red ink in the appropriate side of account current. Third, consignment account is of the nature of real account। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट। द बैलेंस इन पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट ऑन एसेट। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि द बैलेंस रिप्रेजेंट्स द कैश फिजिकली in existence and is therefore on asset. Next, stock at the end if appears in the trial balance is taken only to the balance sheet। ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है? फॉल्स है। फाइव नंबर ट्रू है because it depicts that one aspect of the double entry has been completed। डबल एंट्री का एक एक्सपेक्ट कंप्लीट हो गया, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इन केस अ स्पोर्ट्स फंड इज केप्ट एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट शुड बी चार्ज टू स्पोर्ट्स फंड। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंस्टीट्यूशन समटाइम्स कीप स्पेशल फंड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस। In such a case, the income related to such funds should be added to these funds and expenses should be deducted from such funds। एक्सपेंस को डिडक्ट कर दिया जाता है उस फंड से। सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज it neither reduces asset nor increases liabilities। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सैलरी पेड इन एडवांस रिलेट्स टू द कमिंग अकाउंटिंग पीरियड। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द करेंट पीरियड। हैंस इट इज़ नॉट टेकन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला जाएगा as an expense। It is shown as current asset in the balance sheet। current asset की तरह शो कर दिया जाएगा in balance sheet। Next, number 8, laboratory and library deposits taken from the student in case of an educational institution are shown on the liability side of the balance sheet। ये स्टेटमेंट ट्रू है because the laboratory and library deposit are of the nature of security deposit to be refunded to the student on their leaving the college or university। State with reason whether the following statement are true or false। Number 1, the results and position disclosed by final accounts are not exact। True, they are prepared on the basis of assumptions का basis पे prepare किया जाता है, conventions, concept and personal judgment of the person who prepared them। Second, the rationale behind the opening of a suspense account is to tally the trial balance। ये false है क्योंकि the rationale behind the opening of a suspense account is to avoid delay in the preparation of final
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है।